चक्रवर्ति महाजनानाम् अतीतेषु जन्मसु इह जन्मनि जन्म प्रभृति एतत् क्षणपर्यन्तम् बाल्यकौमार यौवनवार्धकेषु जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यवस्थासु कामक्रोध लोभमोह मदमात्सर्यादिभिः मनोव्यापारैः श्रवणस्पर्शन दर्शन रसनाघ्राणैः ज्ञानेन्द्रियव्यापारैः वचनादान विहरण उत्सर्गानन्दैः कर्मेन्द्रिय व्यापारैश्च संभावितानां ज्ञानतः अज्ञानतश्च असकृदनुष्ठितानां ब्रह्महनन सुरापान स्वर्णस्तेय गुरुतल्पगमन तत्संसर्गाख्य महापातकानां अनृतवदन उत्कर्षभाषण पैशून्य गुर्वभिशंसनादीनां ब्रह्महत्या समपातकानां अधीत वेद विस्मरण वेद निंदा कूटसाक्ष्य सुहृद्वध निषिद्ध भक्षणादीनां सुरापान समपातकानां निक्षेपापहरण नराश्वरजत भूम्यादि हरणादीनां स्वर्णस्तेय समपातकानां भगिनी कुमारी गमनादीनां गुरुतल्पगमन समपातकानां गोवध अयाज्य याजन गुरुमातृपितृत्याग अपत्य विक्रय भृतकाध्यापन अशुष्क वृक्षच्छेदन अनाहिताग्नित्व ऋणानपाकरण असच्छास्त्राभ्यासादीनां उपपातकानां गजाश्वखर उष्ट्रवधादीनां संकरीकरणानां कृमिकीटवध फलपुष्पस्तेयादीनां मलिनीकरणानां निन्दितधनादान वाणिज्य वृषलसेवनादीनां अपात्रीकरणानां ब्राह्मणपीडन मद्यगन्धाघ्राणादीनां जातिभ्रंशकराणां सर्वेषां पापानां अपनोदनार्थम् आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिकाख्य तापत्रय निवृत्त्यर्थम् परैः कृत क्रियमाण करिष्यमाण सकलविध कृत्यापरिहारार्थम् शरीरे वर्तमान वर्तिष्यमाण समस्त रोगपीडा परिहारद्वारा क्षिप्रम् दृढतरारोग्य प्राप्त्यर्थम् वेदोक्त शतवर्ष जीवित्व सिद्ध्यर्थम् अलक्ष्मी परिहारद्वारा श्री महालक्ष्मी कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम् गृहे धनकनक वस्तुवाहन पुत्रपौत्रादि सकल संपत् अभिवृद्ध्यर्थम् आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां शुभ एकादश स्थान स्थिति फलावाप्त्यर्थम् विशेषतः अस्मिन् भारतदेशे परिदृश्यमान परस्पर विद्वेष परस्पर निंदा परस्पर हिंसादीनां निवृत्तिद्वारा सर्वेषां जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य संतोषादि अभिवृद्ध्यर्थं सनातन धर्म विरोधिनां निबर्हणद्वारा धर्म श्रद्धालूनां सकल श्रेयोभिवृद्ध्यर्थं एतद्देश परिपालकानां धर्मे श्रद्धाभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमंकर देवता कार्येषु समुत्पद्यमान सकलविध अंतराय निवृत्त्यर्थं काले सुवृष्ट्या पूर्वोत्तराणां सस्यानां अभिवृद्ध्यर्थं सर्वत्र अद्वैत विद्या प्रचारार्थं क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त दुरितोपशान्त्यर्थं समस्त मंगलावाप्त्यर्थं समस्त अभ्युदयार्थं धर्मार्थ काम मोक्षाख्य चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मक श्री चंडिका परमेश्वरी प्रीत्यर्थं विशेषतः पद्मपुराणे न तत्र देशे दुर्भिक्षं न च दुःखं प्रवर्तते नाकाले म्रियते कश्चित् पूज्यते यत्र चंडिका इति दुर्भिक्ष दुःखादि निवर्तकत्वेन अकाल मृत्यु निवारकत्वेन च संस्तुतायाः ब्रह्मांड पुराणे ये भजन्ति परां शक्तिं विधिना विधिनापि वा चंडिकां त्रिजगद्धात्रीं मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः इत्यादिना सकल पाप निबर्हकत्वेन अभिष्टुतायाः चंडिकार्चन रहस्ये नित्यं यः कुरुते भूपा
चण्डिकायाः समर्हणम् महदैश्वर्यमखिलम् त्रैलोक्ये तस्य जायते रिपवो विलयं यान्ति सर्वे नश्यन्त्युपद्रवाः व्याधयश्चैव नश्यन्ति विघ्नानां जायते क्षयः त्रिषु लोकेषु यत्किञ्चित् सुरासुरसुदुर्लभम् तत्सर्वं हि समायाति चण्डिकायाः प्रसादतः इत्यादिना महैश्वर्यप्रदत्वेन सकलशत्रुनिबर्हकत्वेन निखिलव्याध्युपद्रव विघ्नविनाशकत्वेन समस्तदुर्लभार्थप्रदत्वेन च परिकीर्तितायाः देवी भागवते तस्माच्छक्तिः सदा सेव्या विद्वद्भिः कृतनिश्चयैः धर्मार्थकाममोक्षाणां स्वामिनी सा महोदया ब्रह्मरूपा महादेवी चण्डिका परमेश्वरी यया सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम् इत्यादिना धर्मार्थकाममोक्षप्रदत्वेन संकीर्तितायाः सूतसंहितायाम् अतः सर्वार्थलाभाय चण्डिकां ब्रह्मरूपिणीम् आराधयेत् परां शक्तिं सर्गस्थित्यन्तकारिणीम् इत्यादिना सर्वाभीष्टप्रदत्वेन सन्नुतायाः चण्डिका परमेश्वर्याः माहात्म्यप्रतिपादकेषु स्तवेषु बहुषु सत्स्वपि रुद्रयामले अस्ति गुह्यतमं देव्या माहात्म्यं सर्वसिद्धिदम् वाक्यैरर्थैश्च पद्यैश्च सप्तशत्यात्मकं शुभम् इत्यादिना चिदम्बरसंहितायां मार्कण्डेयपुराणोक्तं स्तवं सप्तशताभिधम् स्तवस्य तस्य पठनात् सर्वसौख्यं लभेत् ध्रुवम् तस्मात् सप्तशती नाम स्तवं परमदुर्लभम् स्तवस्य पठनादेव सर्वे नश्यन्त्युपद्रवाः इत्यादिना डामरतन्त्रे यथाश्वमेधः क्रतुषु देवानां च यथा हरिः स्तवानामपि सर्वेषां तथा सप्तशती स्तवः नातः परतरं स्तोत्रम् किञ्चिदस्ति वरानने भुक्तिमुक्तिप्रदं पुण्यं पावनानां च पावनम् इत्यादिना च सर्वसिद्धिप्रदत्वेन सर्वोपद्रवनिवर्तकत्वेन सर्वातिशयमहिमसम्पन्नत्वेन च संकीर्तितस्य मार्कण्डेयपुराणोक्तस्य देवी माहात्म्य देव्याश्चरितमाहात्म्य चण्डीपाठादि अनेकनामभिः सर्वत्र प्रसिद्धस्य सप्तशतमन्त्रात्मकस्य सप्तशतीस्तोत्रस्य संकटे समनुप्राप्ते दुश्चिकित्स्यामये तथा जातिभ्रंशे कुलोच्छेदेऽप्यायुषो नाश आगते गजमारेष्वमहरे च जनमारे महाभये इत्यादौ विविधे दुःखे रिपुचक्रभये तथा सहस्रं चण्डिका पाठान् कुर्याद्वा कारयेत वा एवं यश्चण्डिका पाठसहस्रं तु समाचरेत् तस्य स्यात् सर्वसिद्धिस्तु नात्र कार्या विचारणा इत्यादिना दुश्चिकित्स्यामया जातिभ्रंश कुलोच्छेद वैरिवृद्धि धननाश गजमार जनमारादि सकल भय निवर्तकत्वेन श्रेयो वृद्धि राज्य वृद्ध्यादि सकल सिद्धिप्रदत्वेन कीर्तितं सहस्र संख्याक पारायणात्मकं दशलक्ष संख्याक नवार्ण मंत्र जपात्मकं दशांश होम पक्षानुसारेण सप्तति सहस्र संख्याक पायसद्रव्यक आहुत्यात्मकं लक्ष संख्याक आज्यद्रव्यक नवार्ण मंत्र होमात्मकं शतांश पक्षानुसारेण सप्त सहस्र संख्याक क्षीरद्रव्यक तर्पणात्मकं सहस्र चंडी पुरश्चरणाख्यं कर्म श्री अन्नपूर्णा देव्याः नूतन बिंबस्य स्थिर प्रतिष्ठा कुंभाभिषेकांगत्वेन नूतन स्वर्णमय शिखर कुंभाभिषेकांगत्वेन च संकल्पितम् आचार्यादि ऋत्विङ्मुखेन करिष्यामः।